So yesterday we were solving this problem 620. It was a design problem. इसमें हमने generic rule of thumb apply किया था and we determined RC, RE. R1 and R2 हमने उसके point of view से दो designs किए थे. One was for IR2 equal to IE and the other one was IR2 equal to 0.1 IE. And we do expect that when you set IR2 equal to IE, that provides us better bias point stability in terms of beta. However, Rin is lower in this case. अगर आप IR2 को 0.1 IE choose करते हैं तो then you get better Rin at the expense of bias point stability in terms of beta. So bias point stability in terms of beta आपको lower मिलेगी, but you will get better Rin. So let's make a comparison. इसको हम evaluate करते हैं और कुछ quantify करते हैं इसको कि क्या वाकई ये दोनों डिज़ाइंस का यही comparison है जो हम expect कर रहे हैं. So let's consider problem exercise 647. So exercise 647 इसमें हमें कहा जा रहा है कि for design 1 and design 2 calculate the expected range of IE if the transistor used has beta in the range of 50 to 100. तो हमें कहा जा रहा है given transistor जो है उसका beta vary करता है from 50 to 150. So we need to see कि design 1 और design 2 का क्या comparison है. अगर beta की ये variation है तो design 1 और design 2 के केस में क्या current की change हमें नजर आएगी. So we are going to determine the percentage change in IE for design 1 and design 2 and make a comparison and see के क्या वाकई design 2 जहाँ पर हमने IR2 को IE के इक्वल रखा था वो better perform करता है. So design 1 में we have design 1, we have design 2. So design 1 के केस में जो हमने चीज़ें evaluate की थी last time. So design 1 implies that IR2 is equal to 0.1 IE and here we determined R1 is equal to 72.793 kilo ohms, R2 is equal to 40k, RC is equal to 4.04k, RE is equal to 3.3k. So ये डिज़ाइन 1 था जो हमने कल किया था और डिज़ाइन 2 के केस में हमने कहा था कि IR2 को हम IE के इक्वल सेट करेंगे एंड R1 जो हमारे पास आया था दैट वाज इक्वल टू 7.9216 किलो ohms. R2 we determined yesterday as 4 kilo ohms and RC is the same as for design 1 क्योंकि ये आपके डिफरेंट रूल से हमने निकाला था. RE is 3.3 kilo ohms. So based on the Thevenin equivalent which we also developed yesterday, for this case RB is equal to R1 in parallel with R2 is equal to 25.815 kilo ohms and RB for design 2 is 2.66579 kilo ohms and BBB here is 4.0263 and for design 1 BBB is 4.2556 volt. तो ये सारी वर्किंग हमने जो yesterday की थी वही हमने यहाँ पर रिपीट कर दी है और now we will work on this exercise 647 जहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि beta is varying between 50 to 150 and we would like to see कि design 1 और design 2 में क्या percentage change आ रही है in the DC emitter current IE. So we do expect कि design 2 में percentage change should be smaller than in design 1 because design 2 में when you set IR2 equal to IE, so IR2 here for design 2 is greater than that for design 1. So we do expect that design 2 should give us better bias point stability in terms of beta, or in other words that means
the percentage change in IE for design 2 should be smaller. So let's evaluate जो yesterday हमने relation निकाली थी, IE is equal to BBB minus BBE divided by RE minus RB by beta plus 1. यहाँ पर VBE को हम कांस्टेंट 0.7 लेकर चल रहे हैं क्योंकि VBE के लिए हमें चेंज नहीं दी गई. अगर VBE के लिए भी हमें चेंज दी होती कि इस रेंज में चेंज हो रहा है तो फिर हम उसके हिसाब से इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करते. So let's evaluate this expression IE at beta is equal to 50 and at beta is equal to 150. So at beta is equal to 50 for design 1 we get IE is equal to 0.93417 milliamperes. जस्ट हमने वैल्यूज यहाँ पर सब्सटीट्यूट की हैं और बीटा को 50 सब्सटीट्यूट किए एंड सिमिलरली डिज़ाइन 2 के लिए भी रिपीट कर रहे हैं प्रोसेस. सो IE is equal to 0.9923 milliamperes. So let's re-evaluate this expression for beta is equal to 150 now. So beta is equal to 150 implies IE is equal to 1.0244 milliamperes, and here at beta is equal to 150 for design 2 we have IE is equal to 1.0026 milliampere. So हमने कहा कि अगर आप बीटा को 50 रखें और एनालिसिस करें तो IE की ये वैल्यू आती है. अगर बीटा को 150 रखें तो IE की वैल्यू विल चेंज एंड विल बी समथिंग लाइक दिस. एंड डिज़ाइन 1 के केस में IE की वैल्यू इज 0.93417 फॉर बीटा इज इक्वल टू 50 and at beta is equal to 150 IE will become equal to 1.0244 milliampere. And to make a quantitative comparison कि actually क्या हमने अचीव किया यहाँ पर और क्या कंपैरिजन है इन दोनों डिज़ाइंस का, let's determine the percentage change. So percentage change in current, percentage change is equal to the change divided by the nominal value जो गिवन थी कि 1 मिली एम्प के लिए आपने डिज़ाइन करना है, multiply by 100. Similarly for the second design, percentage change is the change divided by the nominal value multiply by 100. तो डिज़ाइन 1 के केस में क्या चेंज है, आप कह रहे हैं कि 0.93417 से 0.93417 से चेंज होके मिली एम्पेयर minus 1.0244 milli. So this is a change divided by the nominal value multiplied by 100. So this is equal to 9.023% and the change for design 2 is only 1.03%. तो यहाँ पर भी आपने चेंज निकाल ली है 0.9923 milli minus 1.0026 milli and then you divide this by 1 milli and multiply by 100. So as expected आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन 2 जिसमें आपने IR2 इक्वल टू IE सेट किया था उसमें परसेंटेज चेंज इज मच स्मॉलर देन डिज़ाइन 1 वेयर यू सेट IR2 इक्वल टू 0.1 IE. तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज इज मोर, 9% की चेंज आपको नज़र आ रही है और वेयर यू सेट द करंट IR2 लार्जर, IR2 इक्वल टू IE, तो यहाँ पर आपको 1% की चेंज आ रही है नज़र. सो दिस इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. दिस वाज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग कि IR2 इक्वल टू IE के लिए द परसेंटेज चेंज इन करंट शुड बी स्मॉलर. सो वी हैव नोटिस्ड कि यस द चेंज इज स्मॉलर फॉर IR2 इक्वल टू IE रेदर देन फॉर डिज़ाइन 1. तो यहाँ पर हमने एक्चुअल वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके देख लिया कि अगर बीटा 50 से 150 तक वेरी कर रहा है तो उस केस में क्या चेंज ट्रांसलेट होगी in IE. So design 2 gives us better bias band stability in terms of beta at the expense of Rin. So Rin smaller है यहाँ पर, देखिए Rin की वैल्यू यहाँ पर आपके पास smaller है because R1 and R2 are smaller. However design 1 के केस में R1 and R2 are larger but you get poor bias band stability in terms of
beta changes. जी ये देखिए ठीक है, ये प्रॉब्लम क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन हो? ले जाता सर। ओके, सो अभी हमने ये पहली ऑप्शन देख ली है, विच इज़ अ प्रैक्टिकल बाइसिंग स्कीम यूजिंग दिस पर्टिकुलर। सर जी जी, सर रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट हुई हुई। कोडिंग मैंने स्टार्ट की थी यार, उसको चेक भी किया था, क्या चक्कर हुआ? अच्छा सर मेरे पास नहीं शो हो रही। हाँ सॉरी। नहीं हो रही है, ठीक है, आई थिंक आप दोबारा देख लें, ठीक है ना? यस सर सही। Okay, so we are saying we have discussed this first practical biasing arrangement that is very generic and can be utilized to implement any of the possible amplifier topologies. ये आपकी generic topology है, इसकी मदद से आप किसी तरह का भी amplifier बना सकते हैं. You can implement a common emitter amplifier, you can implement a complete common emitter with RE amplifier, you can implement a complete common base amplifier, you can implement a complete कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर. सो कोई भी टोपोलॉजी इसकी मदद से बनाई जा सकती है. इट्स अ वेरी जेनेरिक टोपोलॉजी, जस्ट रिक्वायर वन एक्सटर्नल पावर सप्लाई और उसको डिज़ाइन आप कर सकते हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑप्शन दैट इज़ अवेलेबल टू अस, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस आर ई इट स्टेबलाइजेज द बायस पॉइंट. और हमने अभी इसमें करके देख लिया कि ये आपको VBE की चेंजेस के अगेंस्ट भी बायस पॉइंट स्टेबिलिटी देगा, ये पर्टिकुलर सर्किट, and it also gives you bias band stability against the changes in beta. So if you have two power supplies available, one positive and another negative, there is a second possibility that one can use. So ये आपके पास slightly simpler circuit है. यहाँ पर आप देख सकते हैं you require two power supplies. If there is an option of two power supplies, one positive and one negative, this topology may be utilized. So let's analyze this on the same lines as before and see कि ये किस तरीके से behave करती है. So let me label the currents here. ये आपके IB है, this is plus minus, this is VBE, this is IE, and let's apply KVL along this loop L. So KVL along the labeled loop L. So आप देख सकते हैं ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, अगर आप इसको लें इस टोपोलॉजी से तो ये माइनस VEE आप लिख सकते हैं. सो आई कैन राइट एज 0 इक्वल्स IB RB plus VBE plus IE RE plus माइनस VEE, क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से लेबल किया है और यहाँ पर ग्राउंड किया है. सो ये ग्राउंड से ग्राउंड तक आपका पाथ कंप्लीट हो गया. सो यू कैन अप्लाई KVL इन दिस पर्टिकुलर वे. सो लेट्स रीअरेंज द टर्म्स. VEE को दूसरी साइड पे ले जाते हैं. माइनस VBE मस्ट बी इक्वल टू IB RB प्लस IE RE. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास IB का वेरिएबल भी आ रहा है और IE का वेरिएबल भी आ रहा है, बट वी नो कि इसको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं. Since alpha IE is equal to beta IB, so beta is beta, alpha is beta by beta plus 1, so we can cancel out these betas and we get IB is equal to IE divided by beta plus 1. So make this substitution, we get IE RB divided by beta plus 1 plus IE RE. So this implies that IE is equal to VEE minus VBE divided by RB by beta plus 1 plus RE. तो इस सर्किट को अगर आप इस रिजल्टिंग इक्वेशन को नोट करें तो इट इज एग्जैक्टली द सेम एज, इट इज इन द सेम फॉर्म एज द प्रीवियस सर्किट में आपके पास जस्ट यहाँ पर जो पावर सप्लाई VEE का रोल है वो प्रीवियस केस में VCC का रोल था. तो यू आर अगेन सेइंग कि देयर इज सम पावर सप्लाई वोल्टेज माइनस VBE in the numerator, and in the denominator you have a resistor
RB divided by beta plus 1 plus RE. So equation has a familiar form just like the previous circuit. So if the previous circuit is able to give you bias band stability, and since this form of this particular circuit is the same as before, तो अगर previous circuit आपको bias band stability दे रहा था, तो this circuit must also be able to provide you with the bias point stability. ठीक है, सो हमने इस केस में क्या किया, हमने KVL अप्लाई किया, हमने एक रिजल्टिंग इक्वेशन IE की निकाली, हमने नोटिस किया कि ये जो रिजल्टिंग इक्वेशन है इट हैज़ अ सिमिलर फॉर्म एज द प्रीवियस सर्किट. So if this circuit also has the similar form as the previous one, so that means कि अगर previous circuit आपको bias band stability देता था, तो ये circuit भी आपको similar तरीके से bias band stability provide करेगा. तो ये देखिए क्लासिकल डिस्क्रीट सर्किट बायस अरेंजमेंट में ये इक्वेशन हमने निकाली थी, और अभी इस करंट सर्किट के लिए दिस इज द इक्वेशन. सो यू कैन से सी के द टू इक्वेशंस आर ऑफ सिमिलर फॉर्म. सो दैट मीन्स के सेम जो हमने कंक्लूजन्स की थी लास्ट टाइम, दे आर आल्सो एप्लीकेबल हियर एज वेल. Also, this scheme is also generic and can be utilized to implement any of the amplified circuits, namely common collector, common emitter with RE, and common base. Let's take a look at an example. Let's say कि हम इसमें common base amplifier बनाना चाह रहे हैं, तो common base amplifier के केस में इसमें हम बना के देख सकते हैं complete amplifier circuit. So this is the biasing topology. So if you want to keep this DC bias circuit intact, which is what we typically do, तो उस केस में you will take advantage of the coupling capacitors and the bypass capacitor. Or in case where you just have to implement a common base, और कोई नहीं बनाना, तो RB को eliminate भी किया जा सकता है, लेकिन let's stay generic. So complete common base amplifier अगर आपने बनाना है with no change in the given DC bias circuit, तो क्या आप करेंगे, आप एक बाईपास कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पर ग्राउंड कर सकते हैं. दिस विल इंश्योर के AC इक्विवेलेंट सर्किट में यू गेट कॉमन बेस टोपोलॉजी. Input will be applied at the emitter terminal because this is what we do for a common base amplifier. So this is V signal, R signal. Output is taken at the collector. So this is RL. तो ये आप देख सकते हैं, this is complete common base amplifier circuit implemented using this biasing topology with no change in the DC equivalent circuit. So यहाँ पर अगर आप DC equivalent circuit draw करेंगे, तो you will get exactly the given bias arrangement. Similarly, let's say कि आपने common emitter बनाना है, तो common emitter भी आप बना सकते हैं इससे. So common emitter, complete common emitter amplifier circuit अगर आपने draw करना है, तो वो भी straight forward है, you can do that very easily. So we have this bias arrangement. This is RB. So we are saying कि complete common emitter amplifier circuit draw करो, तो उस केस में you apply the input at the base terminal, R signal, V signal. तो ये आपने बेस पे अप्लाई कर दिया थ्रू अ कपलिंग कैपेसिटर, ताकि आपका डीसी बायस अरेंजमेंट जो इंटैक्ट रहे. यू टेक द आउटपुट एट द कलेक्टर टर्मिनल, तो आपने आउटपुट ले ली अगेन थ्रू अ कपलिंग कैपेसिटर, ताकि डीसी बायस सर्किट आपका अनचेंज्ड रहे. एंड यू अप्लाई अ बाईपास कैपेसिटर हियर so as to ensure that as far as the AC equivalent circuit is concerned, this bypass capacitor will bypass rest of the circuitry at the emitter, and for the purpose of AC equivalent circuit, it will ensure a grounded emitter topology. So you get a complete common emitter amplifier circuit. So similarly, you can draw a common emitter amplifier with RE and also common collector amplifier using this bias arrangement. So this bias arrangement is generic enough and can be utilized to implement any of the amplifier topology. So और इसमें bias band stability पे हम मज़ीद emphasize नहीं कर रहे हैं. हमने कहा कि ये equation जो इसकी आई है, it is of similar form as before. So since previous circuit हमें bias band stability दे रहा था, so this circuit must be able to provide us with the bias band stability as well.
The third possible practical option for biasing of BJTs is biasing using a collector to base feedback resistor. So let's take a look कि ये topology किस तरह की है. So this is what we have. So ये आपके पास इस किस्म की topology है. यहाँ पर आप note करें this current IRC is not equal to IC. ये चीज़ आपने मिस नहीं करनी. This current IRC is not equal to IC. Why? Because this is IC and this is IB. So if you apply KCL at this node, so KCL at collector, you can see that there is one current entering the node, that is IRC, and there are two currents exiting the node, namely IB and IC. So IRC is actually sum of IB and IC, and the sum of IB and IC we know is equal to IE. सो यहाँ पर ये अपने पॉइंट केयरफुली देखने हैं कि यहाँ पर आई आर सी इज़ नॉट सेम एज आई सी. Actually IRC is IE because IRC is sum of IB and IC as a consequence of this KCL at the collector node. So because of this feedback resistor, this IRC is not equal to IC. Instead, this IRC is equal to the emitter current IE. So let's now apply KVL here along, let's say, this loop, ताकि हमारे पास उसी तरह की फॉर्म की आए इक्वेशन जिस तरह की पहले आ रही थी. इसलिए we deliberately want to involve this VBE here. So let's label the passive sign conventions. This is IE, this is IB, this is VBE, and this, let me call it loop 1, loop L1. So let's apply KVL along loop L1. तो आप देख सकते हैं कि VCC must be equal to this voltage plus minus plus minus plus minus. So by KVL we have VCC is equal to IERC plus IBRB plus VBE. And again, as we have already established many times, that IB is equal to IE divided by beta plus 1. So we can write as VCC minus VBE is equal to IE RC plus IE RB divided by beta plus 1. ये substitution मैंने कर दी. IB is equal to IE divided by beta plus 1. Or in other words, we have IE is equal to VCC minus VBE divided by RB by beta plus 1 plus RC. Again, this equation is of exactly the same form as the previous circuits. Previous circuits में यहाँ पर RE की जगह कोई resistor RB की जगह कोई resistor RE आया करता था, लेकिन still nevertheless there is a resistor being divided by beta plus 1 plus some other resistor, and there is a DC voltage VCC minus VBE appearing in the numerator. So since the form of this equation is again exactly the same as the previous two circuits, so this topology also provide us with the bias point stability. Since the previous two circuits are providing us with the bias point stability, and since this circuit also have a similar form of equation, so this circuit must also be providing us with the bias point stability as well. इस सर्किट में ये देख के बताइए कि अगर यही बायस टोपोलॉजी है और आपने इसी को यूज़ करना है, तो कौन कौन से आप इससे एम्पलीफायर इंप्लीमेंट कर सकते हैं. एज फार एज द कंप्लीट एम्पलीफायर सर्किट्स आर कंसर्न्ड, तो हमारे पास चार तरह के ऑप्शंस हैं. कॉमन एमीटर है, कॉमन एमीटर विद RE है, कॉमन कलेक्टर है, एंड कॉमन बेस टोपोलॉजी है. विद नो चेंज इन दिस बायसिंग टोपोलॉजी आप कौन कौन से टोपोलॉजीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं. Sir, common emitter and common emitter with RE. एक्चुअली जस्ट आप कॉमन एमीटर ही कर सकते हैं, अनलेस कि आप इधर चेंज करें और कोई एडिशनल रजिस्टर अप्लाई करें, राइट. अदरवाइज ये तो डायरेक्टली ग्राउंडेड है ना. अगर ये डायरेक्टली ग्राउंडेड आप रखते हैं तो यू कैन जस्ट अप्लाई, जस्ट डिटरमिन कॉमन एमीटर. तो ये जिस फॉर्म में हमने यहाँ पर शो किया हुआ है,
अगर आपने इस फॉर्म को चेंज नहीं करना तो यू कैन जस्ट इम्प्लीमेंट अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। अगर आपने कॉमन एमिटर विद आर ई इम्प्लीमेंट करना है या कॉमन बेस इम्प्लीमेंट करना है या कॉमन कलेक्टर इम्प्लीमेंट करना है, तो देन वी मस्ट हैव टू चेंज this bias topology and incorporate another resistor in the emitter terminal. So in the present form जिसमें typically हम इसको use करते हैं, this circuit is most appropriate for, is only appropriate for a complete common emitter amplifier circuit. So let's draw a complete common emitter amplifier circuit based on this bias topology. So अगर आपने complete common emitter amplifier circuit इससे draw करना है, तो मीटर इसमें ऑलरेडी ग्राउंडेड है, तो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मीटर इज़ ऑलरेडी ग्राउंडेड। कोई बाईपास कैपेसिटर नहीं आपको चाहिए, मीटर ऑलरेडी ग्राउंडेड है। अगर आप एसी इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रॉ करेंगे तो मीटर उसमें भी ग्राउंडेड ही रहेगा। सो अप्लाई द इनपुट एट द बेस थ्रू अ कपलिंग कैपेसिटर, आर सिग्नल, वी सिग्नल, take the output at the collector through a coupling capacitor, RL. So this is your complete common emitter amplifier circuit using the given biasing topology. बाकी इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको एडिट करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा आपको, उसको रीएनालाइज भी करना पड़ेगा। कॉमन एमिटर कैन बी रेडीली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग दिस पर्टिकुलर बायसिंग टोपोलॉजी। So the next biasing scheme that one can use to implement amplifiers is biasing using a constant current source, and this one is appropriate for integrated circuit implementation. So ये integrated circuit implementation में हम इसको use करते हैं। So this circuit looks something like this. अभी हम देखते हैं कि ये exactly इसका क्या meaning है। So however, if we have a constant current source available, if we have a constant current source available to us, we can very easily ensure that the emitter current is equal to the current of this constant current source, and we're done with the biasing. However, the question is कि ये current source आप किस तरह से implement करेंगे। So ये biasing scheme popular है for integrated circuit application, but we just have to figure out कि ये करंट सोर्स आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इस बायसिंग स्कीम में आप देख सकते हैं कि मेनली कितना स्टेबल बायस पॉइंट है, दैट इज डिटरमिन्ड बाय द क्वालिटी ऑफ दिस करंट सोर्स। सो द क्वालिटी ऑफ दिस करंट सोर्स मेनली डिटरमिन्स कि क्या आपको बायस पॉइंट स्टेबिलिटी मिलेगी, right? So the quality of the current source mainly determines कि आप को कितनी अच्छी बायस पॉइंट स्टेबिलिटी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ बोथ टेम्परेचर एंड बीटा। So इसकी analysis straightforward, again it's a generic topology, can be utilized to implement any of the amplifier circuits, whether you want common emitter, common collector, common emitter with RE and common base topology. So उनमें से कोई भी topology से implement की जा सकती है। For example, अगर आपने common emitter implement करनी है तो apply R signal, V signal here, take the output at the collector RL, and यहाँ पर आपने एक बाईपास कैपेसिटर लगा देना है, तो यू गेट कॉमन एमिटर टोपोलॉजी। देखिए जरा इसका एसी इक्विवेलेंट सर्किट आपके पास क्या आएगा। यहाँ पर एमिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, एसी इक्विवेलेंट सर्किट में ये एक डीसी करंट सोर्स है, इसको कैसे आप रिप्लेस करेंगे। ओपन सर्किट से सर। ओपन सर्किट से, यस एग्जैक्टली। तो इसकी ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ये जो भी पावर सप्लाई है इट वॉन्ट मैटर, ऑल्दो ये कोई वोल्टेज सोर्स होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, सो ये ओपन हो जाएगा, इट विल गेट डिस्कनेक्टेड
and as a by virtue of this bypass capacitor, you will get a short circuit as far as the AC equivalent circuit is concerned. Similarly, आप इसकी मदद से बाकी टोपोलॉजीज भी implement कर सकते हैं, common emitter with RE, common collector and common base amplifier. So, तीनों तरह के एम्पलीफायर्स आप इसकी मदद से implement कर सकते हैं. So the key question here is कि और ये आरबी भी आप अपनी मर्जी का सेट कर सकते हैं, इस पर भी ऐसा सच रेस्ट्रिक्शन नहीं है. सो मेन चीज़ ये है कि आपका ये जो आपने करंट सोर्स इम्प्लीमेंट किए, ये किस तरह का है, इसकी कितनी अच्छी टेम्परेचर स्टेबिलिटी है, इसकी कितनी अच्छी बीटा के टर्म्स में स्टेबिलिटी है एज फार एज द वैल्यू ऑफ दिस करंट सोर्स इज कंसर्न. सो लेट्स टेक अ लुक कि इस करंट सोर्स को आप बीजेटीज की मदद से किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो ये जो हमने यहाँ पर एक शॉर्ट हैंड नोटेशन इंडिकेट की हुई है, दिस इज बेसिकली दिस सर्किट इंडिकेटेड इन फिगर बी, एंड ये जो ब्रांच है दिस इज बेसिकली दिस ब्रांच. सो एक्चुअल अगर आप देखेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट का लेआउट, तो दिस सॉर्ट ऑफ सर्किट विल बी अपीयरिंग इंस्टेड ऑफ दिस शॉर्ट हैंड नोटेशन, बट फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस हम ये शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज करेंगे, कीपिंग इन माइंड कि एक्चुअली इसकी इम्प्लीमेंटेशन इस किस्म की है. एंड दिस इज कॉल्ड अ करंट मिरर सर्किट, करंट मिरर सर्किट. और वाई वी कॉल इट अ करंट मिरर सर्किट, बिकॉज यहाँ पर देखिए ये ट्रांजिस्टर Q1 और ट्रांजिस्टर Q2 इन दोनों के ऊपर सेम VBE आपने अप्लाई की हुई है, एंड सिंस VBE इज सेम, सो ये IC, द टू ICs विल बी सेम. So IC1 and IC2 will be same as long as the transistor Q2 is in active mode. अगर transistor Q2 active mode में है, तो the current of Q1 is being mirrored into transistor Q2. So IC2 will be equal to IC1 as long as the transistor Q2 stays in active mode. ट्रांजिस्टर Q1 पे अब अगर आप गौर करें तो इसमें कलेक्टर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द बेस टर्मिनल. कलेक्टर टर्मिनल और बेस टर्मिनल को हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ है, VC इज इक्वल टू VB. इस किस्म के जब आप इस तरीके से BJT को यूज़ करते हैं बाय कनेक्टिंग द कलेक्टर टू द बेस, वी कॉल इट अ डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर. इसको हम डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर कहते हैं. वाई? बिकॉज इसकी इक्वेशन उसी किस्म की आएगी जिस तरह की डायोड की आती है. यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन VCB इज इक्वल टू 0. एंड रिकॉल करें कि फॉर एक्टिव मोड VCB नीड्स टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -0.4 वोल्ट. VCB needs to be greater than or equal to -0.4 volt for active mode. What does this mean? इसमें ये देखें आपने कंस्ट्रेंट इम्पोज किया हुआ है. So क्या ये ट्रांजिस्टर कभी जाएगा सैचुरेशन में based on this condition? What do you think? नहीं जाएगा सर. ये नहीं जा सकता, राइट? क्योंकि आपने एक हार्ड कंस्ट्रेंट इस पे इम्पोज किया हुआ है. यू हैव फिक्स्ड VCB इक्वल टू 0. So this condition is always true. So that means this transistor can never be in saturation. A diode connected transistor can either be cut off if VBE is not enough, अगर cut in voltage से नीचे है, or it can be in active mode. A diode connected transistor can never go into saturation. So what we are saying is that if this VCC is enough, this Q1 will always be inactive. Then it's just a matter of के Q2 active में है कि नहीं. ओवरऑल सर्किट में ये अपने चीज़ इंश्योर करनी होती है इस किस्म के डिज़ाइन में कि Q2 always stays inactive. As long as the transistor Q2 stays inactive, the current of transistor Q1 will be mirrored into Q2 and you get this sort of model. और आप इसको इस तरीके से मॉडल कर सकते हैं और इससे कांस्टेंट करंट सोर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं. Q2 डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर नहीं है, इट कैन गो इनटू सैचुरेशन. सो अगर Q2 जो है सैचुरेशन में चला जाएगा तो देन इट इज नो लॉन्गर अ वैलिड करंट सोर्स. So one has to ensure in the overall design that Q2 always stays in active mode. So if you apply KVL, one can see that कि ये आपके पास VCC है, this is the passive sign convention. ये यहाँ पर कोई drop नहीं है, VCB is equal to 0, this is VBB. So VCC is equal to I ref R plus VBE.
क्योंकि यहाँ पर तो ये ड्रॉप तो ज़ीरो है ना, VCB ज़ीरो है, प्लस VBE माइनस VEE। तो यहाँ पर अगर आप इसको रीअरेंज करें तो अगेन आप देख सकते हैं कि आई रेफ आपके पास इस किस्म का आया है। सो एज लॉन्ग एज VCC प्लस VEE इज सफिशिएंटली ग्रेटर देन VBE, you get a stable reference current. And if reference current is stable, then this IC1 is also stable, and and as long as the transistor Q2 stays in active mode, this current will get mirrored here and will form the overall current of the given current source. So this sort of circuit is called a current mirror circuit. And this current mirror circuit is basically used to implement a current source, which is the popular way for biasing in integrated circuits. So Q2 has to stay in active region, which means this condition, यहाँ आप कह लें VCB is greater than or equal to -0.4 volt, or alternately ये भी equivalent है, VCE is greater than or equal to 0.3 volt. So this has to be ensured. तो ये तमाम सिचुएशन में जिसमें आपने यूज़ करना है, this has to be ensured. So ये आपका जो टिपिकली आप यूज़ करते हैं 741 op amp, ये उसका लेआउट है। हम इसमें सारे को अंडरस्टैंड करने में इंटरेस्टेड नहीं है, जस्ट इसमें हम करंट मिरर सर्किट को देखने में इंटरेस्टेड हैं। तो you need 40 or 50 transistors to implement a 741 op amp. So 741 op amp overall एक amplifier है with extraordinarily high input resistance, very good output resistance and excellent gain. Gain भी बहुत significant है, इसलिए उसमें multiple stages हैं आपके पास, multiple amplifier stages लगी हुई हैं, और हर amplifier को obviously biasing चाहिए। तो ये देखिए ये आपको डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर नजर आ रहा है, राइट? डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर अलोंग विद Q10 इज अ करंट मिरर सर्किट। ये देखिए ये भी करंट मिरर सर्किट टाइप की चीज़ आपको नजर आ रही है। यहाँ पर देखें ये Q12 एंड Q13 आपको करंट मिरर सर्किट नजर आ रहा है, राइट? एंड सो यू कैन सी कि यहाँ पर हम उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, जस्ट ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मल्टीपल जगह पर आपको करंट मिरर सर्किट्स चाहिए ताकि आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ऑल्सो इसमें डिफरेंशियल स्टेजेस भी हैं जो कि अभी हम इस सेमेस्टर में नहीं पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। सो डिफरेंशियल स्टेजेस आर ऑल्सो यूज्ड विद द op amp, बट वी जस्ट वांट टू एम्फसाइज हियर दैट यू नीड मल्टीपल करंट मिरर सर्किट्स, one for every amplifier stage, to ensure कि उस particular amplifier stage की बाइसिंग हो गई है, और उसकी बाइसिंग करने के बाद आप फिर नेक्स्ट स्टेज की बाइसिंग करेंगे एंड सो ऑन। और इस तरीके से integrated circuit में it's easier to implement transistors rather than resistors. So this is the main biasing scheme preferred for integrated circuit application, biasing using a constant current source. Okay, let's now take a look at a few more design examples. So अभी जो पहले हमने एग्जांपल कंसीडर की थी उसमें हमने जेनेरिक रूल ऑफ थंब अप्लाई किया था, और जेनेरिक रूल ऑफ थंब में हमने कहा था कि लेट्स गिव इक्वल प्रायोरिटी टू ऑल द सिग्नल स्विंग्स एंड द बायस पॉइंट स्टेबिलिटी एंड डू द डिज़ाइन। व्हाट इफ वी आर गिवन विद स्पेसिफिक्स कि इतना आपने रखने पॉजिटिव स्विंग को, इतना आपने नेगेटिव स्विंग को रखने, तो उस केस में किस तरह से प्रोसीड करेंगे। सो वो भी हम आई थिंक लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करके देखते हैं कि जब आपको एक्चुअल स्पेसिफिक्स गिवन होते हैं कि इतनी आपने पॉजिटिव स्विंग रखो, इतनी नेगेटिव स्विंग रखो, गेन को प्रायोरिटी दो या बायस पॉइंट स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दो, तो उस केस में आप प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे। सो लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करके देखते हैं।